Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. And I'm Ruchi Sharma. Let's start with the top story for today. Leading cryptocurrencies continue to suffer from the contagion effect, this time around uncertainty concerning crypto-friendly bank Silvergate Capital triggered panic among crypto investors. Bitcoin, the most popular cryptocurrency, lost over 5% from $23,500 to $22,240 in just over 60 minutes on Friday. Bitcoin's price fell to an intraday low of $22,020 after Silvergate informed exchange that it is reviewing whether it can remain viable. The news led to dumping of leading cryptocurrency. After remaining roughly steady at $23,500 for most of the past day, it appeared to have rebounded slightly, recovering to just under $22,400 following its plunge. ETH saw a similar pattern, falling to $1,550 after spending the past day hovering around $1,650 with limited change. The global crypto market capitalization has decreased by 3.92% in the last 24 hours, currently standing at $1.03 trillion. Bitcoin's market cap declined by over $20 billion to $431.9 billion, according to CoinMarketCap. Crypto's overall market cap is at $1.07 trillion. Open interest in Bitcoin futures was down 8.8% in the last 4 hours, according to CoinGlass. Open interest for Ether was down 5%. Meanwhile, analysts are driving optimism from BTC's rhythm of higher highs and higher lows, which is still in place, and they see it staying there until the recent low of $22,800 is not taken out. तो यहाँ पे सिल्वरगेट ने जैसे ही अनाउंस किया कि दे आर ड्यूबियस वेदर द बैंक इज वायबल और नॉट, तो उसके बाद ही जो बिटकॉइन है उसमें 60 मिनट के अंदर 5% वो नीचे चला गया. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सिल्वरगेट है वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है. तो जैसे हमने पहले देखा एक्सचेंजेस कितनी बैंकरप्ट हुई हैं और उसके बाद सिल्वरगेट की तरफ से ऐसी एक खबर आना तो बहुत ही कंसर्निंग है ये, और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी गई इसकी वजह से, और इन्वेस्टर्स भी कंसर्न्ड है. और ये सब शुरुआत हुई क्योंकि सिल्वरगेट जो है अपनी एनुअल 10 की फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करने में डिले हो गया, जिसके बाद एसईसी ने जो है को उसने नहीं फाइल किया. उसके बाद कुछ ऐसा सेंटिमेंट बन गया कि हो सकता है कि सिल्वरगेट बैंकरप्ट हो जाए, और जैसे ही खबर थोड़ी सी फैली उसके बाद से जो है हमने एकदम से देखा कि बीटीसी और ईथर दोनों जो है उनके प्राइसेस गिरे और ओवरऑल मार्केट जो है वो अफेक्ट हुई. और ऐसा होता है जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो मार्केट जो है हमेशा उससे अफेक्ट होती ही है. मूविंग ऑन. During this week's discussions, some G20 members suggested that a complete ban on cryptocurrency be considered. According to Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das, there were opinions expressed that the option of a ban or prohibition should also be considered, Das said, on the final day of a 2-day meeting of finance ministers and central bank governors in Bengaluru on 25th February. Furthermore, Finance Minister Nirmala Sitharaman, who led the media briefing, said there was almost a clear understanding that anything issued by an entity other than the central bank was not a currency, although G20 members also recognized that the technology underpinning crypto is useful for financial technology. तो शक्तिकांता दास जो है उन्होंने हमेशा से ही एक अपना एप्रीहेंशन दिखाया है टुवर्ड्स क्रिप्टो. वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव दिखा है कि वो क्रिप्टो को बैन करना चाहते हैं. और इस बार G20 की जो मीटिंग हुई बेंगलुरु में, वहाँ भी ये कहा गया कि क्रिप्टो को बैन करना बिल्कुल ऑफ द टेबल नहीं होना चाहिए, उसका ऑप्शन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अगर किसी को प्रोहिबिट करना है या फिर बैन करना है क्रिप्टो को, तो वो ऑप्शन भी उसको भी कंसिडर करना चाहिए. इस तरह की बात हुई है G20 की जो भी मीटिंग हुई थी उसमें. तो आई थिंक इस बात से शायद शक्तिकांत दास थोड़े खुश होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपोज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को. साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि कोई भी करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी इशू करता है वो करेंसी नहीं मानी जाएगी. ये बहुत क्लियर है बात. जी बिल्कुल. हाँ, तो जैसे सेंट्रल बैंक अपनी सीबीडीज लेकर आएगा वो ठीक है,
लेकिन अदरवाइज जो और बाकी करेंसीज हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड करेंसी। सो ये दो बातें जो है वो बहुत क्लियर कर दी गई थी इस मीटिंग में। बिल्कुल। अब आने वाली जो मीटिंग है जो सितंबर में होने वाली है, सबकी नजरें उस पर ही रहने वाली है जी। और ये इस बार से भी एक्सपेक्ट किया गया था कि कुछ ना कुछ तो शायद आए, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर इस मीटिंग में तो अभी सब लोग सितंबर में देखने वाले हैं G20 मीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि तब कोई बड़ा ना बड़ा खुलासा जरूर होगा। जी। Moving on, the International Monetary Fund and the United States backed a push by Group of 20 President India to regulate cryptocurrencies on February 25th as the bloc's finance chiefs wrapped up 2 days of talks. India has stated that it wants a global effort to address the issues raised by cryptocurrencies such as Bitcoin, and the Finance Ministry has stated that it has held a seminar for G20 member countries to discuss how to develop a common framework. Speaking on the sidelines of the G20 meeting in Bengaluru, US Treasury Secretary Janet Yellen said it was critical to put in place a strong regulatory framework, but added that the United States had not suggested any outright bans. We have not suggested outright banning of crypto activities, but it is critical to put in place a strong regulatory framework, Yellen said. We are working with other governments. तो यहाँ इंडिया को यूएस का सपोर्ट दिखता नजर आ रहा है। तो जैसे कि येलन ने कहा है कि जी जानेट येलन ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि बैन करें, लेकिन सभी जो है एक फ्रेमवर्क या रेगुलेशंस लेकर सभी कंट्रीज जो हैं वो आपस में डिसाइड करके ये G20 प्रेसिडेंसी में सामने आए। बिल्कुल जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड jointly produced a new synthesis paper which announced India as the holder of the Group of 20 presidency in Bangalore on February 25th. The announcement came after 3 days of meetings in India among the world's 20 largest economies, known collectively as the G20, with a focus on developing a global regulatory framework for cryptocurrency. The synthesis paper will be submitted during India's G20 presidency, which culminates in September when India hosts G20 leaders from across the world, said India Finance Minister Nirmala Sitharaman during a press conference. तो यहाँ जो IMF हैं और FSB हैं उन दोनों ने मतलब वो जो है एक सिंथेसिस पेपर पेश करेंगे जब G20 मीट होगी सितंबर में, और उसमें एक फ्रेमवर्क होगा पूरा रेगुलेशंस का जो कि क्रिप्टो को लेकर होंगे, और फिर देखा जाता है कि वो पास होता है या नहीं होता, और जो अगर वो पास होता है तो फिर उसी फ्रेमवर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमेशा से कहा गया है, इंडिया ने भी कहा था कि कोई एक देश जो है वो नहीं डिसाइड करेगा कि क्या रेगुलेशन होने वाला है, सारे देशों को एक साथ इस पर सहमति देनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि सभी कंट्री के मेंबर्स तो होते ही हैं, IMF भी हैं, FSB भी है, तो वो मेंबर्स साथ मिलकर एक सिंथेसिस पेपर जो है वो तैयार करेंगे, और फिर उसे हम आगे G20 में देखेंगे कि वो प्रस्तावित होता है और उसके आगे उस पर क्या डिसीजन लिया जाता है, वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अभी G20 की रीसेंट प्रेसिडेंसी जो मीटिंग हुई है उसमें ये देखा गया कि चाइना ने सपोर्ट नहीं दिया है। जी, एंड रशिया ने भी। जी बिल्कुल, रशिया ने भी सपोर्ट नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि जो सितंबर में ये मीट होने वाली है उसमें क्या होता है। और बिल्कुल ये जो सिंथेसिस पेपर जो होने वाला है, आप इसे हम एक ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं। तो उसमें जो जितने भी रेगुलेशंस हैं, जो भी ये लोग एक तरह से रूल सेट करेंगे, वही शायद पास हो जाएं और फिर कुछ देखने मिले। Moving on, Nishad Singh, the former director of engineering at now bankrupt cryptocurrency exchange FTX, pleaded guilty to US criminal charges on Tuesday and agreed to cooperate with prosecutors' investigation into FTX founder Sam Bankman-Fried. "I'm unbelievably sorry for my role in all of this," Singh said, adding that he knew by mid-2022 that Bankman-Fried's hedge fund Alameda Research was borrowing FTX customer funds and customers were not aware. Singh said that he would forfeit proceeds from the scheme. Bankman-Fried, FTX's founder, pleaded not guilty to 8 criminal charges filed against him in December. Prosecutors say he stole billions in FTX customer funds to plug losses at Alameda. He has acknowledged inadequate risk management but says he did not steal funds. Singh, 27, pleaded guilty to 1 count of wire fraud, 3 counts of conspiracy to commit fraud, 1 count of conspiracy to commit money laundering, and 1 count of conspiracy to defraud the United States by violating campaign finance laws. तो पहले कैरोलिन, उसके बाद फिर गैरी वैंग और अब निशाद सिंह। तो इन्होंने भी ये कबूल तो कर लिया है कि इन्हें पहले पता चल गया था कि वो अलामीडा में कस्टमर फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
लेकिन अब इन पे भी काफ़ी ज़्यादा, इसके बाद SBF पे देखा जाए तो थोड़ा उनका जो जेल टर्म है शायद वो कम हो जाए, क्योंकि कैरोलिन गैरी वैंग और निषाद सिंह ने ये तो कबूल कर ही लिया है। और इसके अलावा निषाद सिंह पर SEC ने भी मुकदमा दायर किया है, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ मिसलीड किया और नहीं गवर्नमेंट को बताया, उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ें काफ़ी पहले से पता थी और काफ़ी अच्छा काफ़ी लंबा इन्हें जेल टर्म भी हो सकता है। हाँ, 75 इयर्स का जेल टर्म हो सकता है। अब फिलहाल $250,000 के बॉन्ड पर ये बाहर हैं। और क्योंकि अभी 3 देखा जाए तो 3 जैसे कैरोलिन की बात हो रही है, गैरी वैंग की बात हो रही है और निषाद सिंह, ये 3 लोग हैं जो कि गवाही दे सकते हैं सैम बैंकमैन-फ्रिड के खिलाफ। तो वो एक प्रॉब्लम होगी उनके, इससे उनके लिए जो है, जो क्योंकि वो हमेशा से मना कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती है, हर चार्जेस से वो अपना हाथ पल्ला छुड़ा रहे हैं, उन पर 12 चार्जेस हैं, तो अब वो मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल। So moving on, according to data from DappRadar, the non-fungible token marketplace Blur overtook rival OpenSea in transaction volume and generated over $1.3 billion worth of Ethereum NFT trades over the past 30 days. The figure effectively represents a 194.21% increase from what was obtained in the previous month. Meanwhile, OpenSea saw $371.3 million in transaction volume within the same time frame, representing barely a 16.8% positive growth of the prior period. The X2Y2 NFT marketplace, occupying the third position, came close behind with $355.6 million. Notably, the surge in the volume of Blur follows an airdrop of its Blur governance token to NFT traders who earned rewards through the marketplace and those who traded elsewhere ahead of the launch. According to the market tracking site CoinMarketCap, the Blur token has a reasonably high market cap of $322 million despite launching only 16 days ago. It trades at $0.8166 with a 12% fall in the last 7 days. तो यहाँ ब्लर जो है लगातार टफ कंपटीशन दे रहा है OpenSea को। ऐसे टफ कंपटीशन कहना भी मतलब छोटी बात होगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम ब्लर ने की है, जो कि है $1.3 बिलियन, उससे हाफ से भी कम जो है OpenSea ने दर्ज की, जो कि ओनली $371.3 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ जहाँ 194% का इतना ह्यूज ग्रोथ ब्लर ने देखा है सिर्फ 4 महीने, ये तो प्रीवियस मंथ से कंपेयर्ड ग्रोथ है, अदरवाइज 4 महीने पहले ही वो लॉन्च हुआ है। वहीं OpenSea का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 16% है। तो यहाँ बहुत ही क्लियर है कि विनर कौन है, कौन विनर दिखता है। ये लॉन्ग टर्म विनर है या नहीं, ये मैं नहीं कह रही, उस पर कॉमेंट नहीं कर रही। फिलहाल जो है मार्केट लीड कर रहा है ब्लर, और लेकिन ब्लर भी बहुत सोची समझी तकनीक यूज़ कर रहा है। जैसे बार बार एयर ड्रॉप्स लेकर आता है। अभी एक एयर ड्रॉप सीजन वो ला चुका है जो कि हिट रहा था, और अभी सेकंड एयर ड्रॉप सीजन जो है आने वाला है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्लर कब तक एयर ड्रॉप के लालच में यूजर्स को अट्रैक्ट करता रहेगा, और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी। आपने कहा कि अभी तो मार्केट लीड कर रहा है ब्लर, क्योंकि उसका जो टोकन है अभी कुछ दिन पहले ही आया, लेकिन $322 मिलियन का जो मार्केट कैप है वो उसका है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, Fiat and Kia's newly introduced Metaverse dealership is anticipated to revolutionize the car buying experience. The two automakers are also among the first to identify practical business applications for ChatGPT. They can interact virtually with a human or artificial Fiat genius who can answer questions about Fiat vehicles in real time using ChatGPT. Customers can look over a vehicle's feature, ask the Fiat genius questions, and possibly even complete their purchase from home. The Fiat Metaverse store is currently only available in Italy, but it will soon be available in other countries, including the US. Kia Germany has also unveiled a Metaverse store that runs on Engage, a business Metaverse platform. Customers can access the space via mobile device or computer, but a VR headset provides the best experience. Customers can interact with the vehicles, check out the service space, and get their questions answered by clicking on links that take them to Kia's website using digital avatars. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो यहाँ लगातार मेटावर्स में फोरे कर रही है, और अब किया और फियाट ने भी एक कदम उठाया है। तो ChatGPT यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो AI है इट इज़ कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ मेटावर्स। तो AI का ही जो ये ChatGPT है, इसके थ्रू अब किया और फियाट इसे यूज़ करने वाले हैं अपने वर्चुअल शोरूम्स में। तो अब हम घर बैठे कार भी खरीद सकते हैं, वर्चुअल शोरूम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और वहीं पे ChatGPT के थ्रू हमारे जितने भी सवाल होंगे वो आंसर हो जाएंगे। और अभी तो किया ने और
जो फियाट है उनके इटली में अभी इनकी जो ये ब्रांच है वो है वर्चुअल मेटावर्स जो इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन अभी ये और कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएस में भी आने वाले हैं। लाइफ कितनी आसान होने वाली है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको अलग अलग शोरूम से दोपहर में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे क्वेश्चंस के आंसर ले लीजिए, कौन सा कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, सारी डिटेल्स ले लीजिए। इट्स वेरी वेरी ईजी एंड आई थिंक दैट्स व्हाई स्पेशली ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो मेटावर्स की तरफ बहुत जा रही है। हमने देखा फोर्ड और मर्सिडीज, BMW, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि पेटेंट्स बहुत सारे जो है NFTs को लेकर भी और मेटावर्स को लेकर भी फाइल कर रहे हैं। Moving on, MyAlgo, a native wallet for blockchain protocol Algorand, has advised users to withdraw funds it was stuck by an exploit last week. Blockchain sleuth Zach XBT said that 19.5 million Algo and 3.5 million USDC worth $9.6 million has been stolen. Centralized exchange Change now has frozen $1.5 million. Algorand CTO John Woods said that 25 wallets have been impacted and that the exploit is not the result of any underlying issue with the Algorand protocol or SDK. Woods added that he will post an explainer video once the investigation into the hack concludes. MyAlgo said that it does not know the root cause of the exploit. The price of the Algorand token is down by 1.05% over the past 24 hours following the hack. It trades at $0.25. तो ये हमेशा होता है, जैसे हमने बात अभी की भी विशाखा की, चाहे कुछ एक मार्केट सेंटिमेंट बनता है, कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो सब हम कॉइन्स में या करेंसीज में एक उछाल देखते हैं। वहीं अगर कुछ नेगेटिव होता है, जैसे कुछ हैक हो गया, रग पुल हो गया, तो एकदम से जो है कॉइन्स उससे इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी एक हैक हुआ है, लेकिन हैक की एक्चुअली कॉइन है वो भी इसी तरह से नीचे गिरा है। लेकिन ये हैक क्यों हुआ, इसके क्या वजह थे, ये नहीं पता चला। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने क्लियर किया CTO ने जो Algorand के है कि ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी की वजह से तो नहीं हुआ है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि क्या क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रांसपेरेंसी होती है कि वो अपने यूजर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स भी और अपने सक्सेस को भी। तो उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे उन्हें पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्या वजह थी, कैसे हुआ एक्सप्लॉइट, कैसे हुआ हैक, तो वो ज़रूर उसका वीडियो जो है वो सभी यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। जो Algorand के CTO जैसे कि आपने बताया जॉन वुड्स ने ये भी कहा है कि 25 वॉलेट्स अफेक्ट हुए हैं और अभी जैसे ही पता चलता है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और पता चलता है कि किस वजह से हैक हुआ, तो वो एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो डाल देंगे सभी यूजर्स के लिए, क्योंकि यूजर्स का भी एक कंसर्न रहता है कि क्या करें, अब इतना बड़ा हैक हो गया है तो उनके फंड्स के लिए उनके फंड स्टेक रहते हैं। बिल्कुल। Moving on, Coinbase has launched Base, a layer 2 network built with Optimism's OP stack in order to attract millions of new crypto users in the coming years. Coinbase launched the Base testnet on February 23rd. According to the company, Coinbase is joining Optimism as a co-developer on the open source OP stack, a developer toolkit for the Optimism network. Base, on the other hand, will not be limited to Ethereum. It will also provide simple and secure access to layer 2 networks such as Optimism, as well as other blockchain ecosystems such as Solana. Coinbase would allow developers to directly integrate their product with Base and provide fiat on-ramps targeting an estimated 110 million verified users and $80 billion in assets on the platform in the Coinbase ecosystem. तो Coinbase यहाँ बेस जो कि वर्ल्ड का पहला ये बन गया है जिसने एक्सचेंज है, जी बिल्कुल, जिसने एक लेयर 2 जो लेकर आया है, और ये इथीरियम पर ही नहीं, आने वाले टाइम पे सोलाना या जो अदर ब्लॉकचेन्स है उस पर भी होगा। और इसके थ्रू ये आने वाले कुछ महीनों में एक मेन नेट लॉन्च करना चाहता है और बेसिकली चाहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा डी एप्स आएँ और जिससे कि 500 या कितने भी बिलियंस में यूजर्स आएँ और आने वाले 5 से 10 सालों में एक अच्छा खासा एक ओपन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म सभी को मिले। जी। और लेयर 2 पर आएंगे तो ऑब्वियसली जो है गैस फीस भी नीचे आएगी और सभी ट्रांजैक्शंस की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो इट्स वेरी गुड एंड वी ऑल नो दैट ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। तो ये टेक्नोलॉजी हर कोई यूज करने वाला ही है। तो इसमें जितना ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, आई थिंक इट्स गुड फॉर द ओवरऑल इकोसिस्टम एंड द कम्युनिटी। बिल्कुल। That's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend.